Assalamu alaikum, hello and very good morning to all of you. Welcome to शाहिद सर फिजिक्स क्लास. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ लाइट. दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, चैप्टर नंबर फर्स्ट. सो हियर वी गो फॉर द लेक्चर. नेचर ऑफ लाइट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइट को डिफाइन की कोशिश करेंगे. व्हाट इज लाइट? सिंपल, हम इसको ज्यादा मतलब डीप नहीं जाएंगे. Simply we will have a small discussion on light. First we will give the definition of the light, then I'm going to explain you in a very simple manner what is the nature of the light. यही चैप्टर कल आपको 12th क्लास में भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको देंगे, थोड़ा बेसिक्स आपको समझाएंगे ताकि 12th क्लास में आपको कोई दिक्कत ना आ जाए. तो here we go for the lecture. So first of all, what is light? What is light? हम सबको ये पता है. Everybody of us know what is light. So here I will write light is a form of energy. Light is a form of energy that enables us to see the world, or it gives us sensation of sight. Very good. समझ आया? तो very simple. Light is a form of energy that enables us to see the world, or it gives us sensation of sight. So this is the definition. This is the definition of the light. You know, you cannot see the world without the light. If, for instance, if you close your eyes, you cannot see the world around you. So it is the light. Light has the ability, light has the property that it gives us the sensation of the vision, the sensation of the sight. So it is a form of energy. हम कहते हैं ना कि एनर्जी क्या है? It is the ability to do the work. तो लाइट का काम यहाँ पे क्या है? लाइट का काम यहाँ पे ये है कि ये हमें मदद देती है. It helps us to see the different things that are around us. So that is why जो मैंने बोर्ड पे डेफिनेशन लिखी है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, शाबाश, वेरी गुड, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that enables us to see the world, or it gives us sensation of sight, or you can also write sensation of vision. Sensation of vision. Very good. So this is what we called as the definition of the light. I hope it is clear to you. Now coming to the nature of the light. 4-5 points you have to remember for the nature of the light. Again, I am telling you that this chapter, again you are going to deal with this chapter in class 12, and that very in detail. But here, I am going to give you a small description and a very simple way, the concept regarding nature of the light. तो यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. तो 10th क्लास के लिए जितना मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा ना उतना काफी है. तो अगर आप बोर्ड एग्जाम पे ये क्वेश्चन आता है तो जितने भी पॉइंट्स में यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लाइक 4-5 पॉइंट्स रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द लाइट, आपको वही पॉइंट्स को फोकस करना है. आई होप इट इज क्लियर. ओके, नाउ कमिंग टू द नेचर of light. First point that you have to remember, light, as I already told you, is a form of energy. Light is composed of small discrete particle, and each particle is called a photon. So I will write here, light is
composed of small discrete particles called photons. Okay. जिस तरह हम कहते हैं सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी और लाइफ, सेम इज द केस जो फोटॉन है ना, फोटॉन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइट. सो हियर आई विल राइट फोटॉन. फोटॉन इज द यूनिट structural unit of light. So this is the first characteristic. This is the first point related to the nature of the light. Okay. So what is that? The light is composed of small discrete particles. कभी टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं corpuscles. Okay. And each particle is called a photon. So photon is the structural unit of light. This is the first point that you have to remember when there is a question like what? Nature of light. So I hope it is clear to you. Okay. Now coming to the second point. Okay. So my dear students, we are discussing about the nature of the light, and in nature of the light I have mentioned the one point that the photon is the structural unit of the light. Why? Because light consists of small particles, composed of small particles called photons. Next point, light travels in a straight line. Very good. Light travels in a straight line. Very good. So it is simple. So whenever the light travels from, whenever the light propagates from any medium, the medium may be vacuum or air or there are so many media. So बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन जब भी लाइट सोर्स से निकलती है, when it propagates through the medium, the direction of the light is always in a straight line. The direction is always in a straight line, and it is represented by a straight line and an arrowhead in the middle. So this is called a light ray. इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है. जो लाइट है, it always travels in a straight line. So it is easy to remember. Third point, Shabash, third point, very, very important. Light is a transverse wave. Light is a transverse wave. See, light is a transverse wave. When light propagates, it forms crests and troughs. तो इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. तो सिंपली आपको याद रखना है, लाइट जो है, when light propagates, it forms crests and troughs like this. This is called crest, and this is called trough. A complete crest and a complete crest and complete trough. One crest and one trough. It forms a complete wave. And one more point that you have to remember, when you say light is a transverse wave, transverse wave is the wave, transverse wave is the wave in which light forms crests and troughs. And one more point here I am going to add, light is an electromagnetic wave. Magnetic wave. तो यहाँ पे इस चीज को, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव simply means disturbance. So when light travels, two fields are
associated with the light. One is the electric field, another is the magnetic field. So जब भी light propagate करती है, दो fields operate हो जाते हैं light wave में. तो one is called as electric field, that is electro, and magnetic field means magnetic. Magnet is related with the magnetic field. So it forms some sort of disturbance. That is why it is called electromagnetic wave. जब आप किसी pond में you throw a pebble, तो आप गोल सर्कल्स आप देखते हो, वो दिस इज सिंपली डिस्टर्बेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो वहां पे वो वेव बनती है. तो सेम इज द केस, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव और वी कैन से लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ट्रांसवर्स वेव आपने 9th में पढ़ा होगा. लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वेव. तो वहां पे मीडियम इज नेसेसरी फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव टू प्रोपोगेट. लेकिन ट्रांसवर्स वेव को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है. Even light can pass through the vacuum. So vacuum में कोई medium नहीं होता, no air is there. So that is why it is called a transverse wave. तो longitudinal wave, sound wave जो है, जो mechanical wave है, तो इसको जरूरी चाहिए होता है क्या? Medium. So whether solid, liquid or gas. Solid में ज्यादा sound create होता है, like less in liquids and very less in gases. So here we are not going to discuss that. So simply what you have to remember in the nature of the light is a transverse wave and electromagnetic wave. When you say transverse wave, it forms the crest and a trough. A complete wave is a wave in which a complete crest and trough is formed. I hope it is clear to you. So third point is clear. Now, जब ये concept of light आया था तो पहले कहा गया कि light has an only one nature, that is particle nature. तो पार्टिकल नेचर मैंने आपको कहा कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स. लेकिन जब क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट आ गई तो द कंसेप्ट वाज चेंज्ड. तो कहा गया नहीं, लाइट हैज टू नेचर्स, लाइट हैज ए ड्यूअल नेचर. इट इज अ वेव एज वेल एज इट हैज अ पार्टिकल नेचर. सो दिस कॉल्ड ए ड्यूअल नेचर. तो आई विल राइट हियर नेक्स्ट पॉइंट, लाइट हैज ए dual nature, that is particle nature as well as wave nature. See my dear, when you say light has a particle nature, if light is absorbed or reflected, so it is a particle nature. But when जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, अगर ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ही छोटा होता है, तो लाइट जो होता है इट बेंड्स अराउंड दैट वेरी ऑब्जेक्ट. जो आपको 12th में पढ़ना है, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, या यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट स्ट्राइक करते हैं फिर वापस आ जाती है. रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट एब्जॉर्ब, यानी लाइट एंटर्स इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम. तो जब लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दिखाती है तो उस वक्त हम कहेंगे लाइट जो है, देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड द एनर्जी. तो इसका मतलब है इट हैज अ पार्टिकल नेचर. तो जब ये लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है लेकिन उसका साइज छोटा होता है, इट बेंड्स अराउंड दैट वेरी ऑब्जेक्ट, तो दैट्स कॉल्ड डिफ्रैक्शन. दैट्स कॉल्ड व्हाट? डिफ्रैक्शन. तो सिंपल आपको अब याद क्या रखना है, लाइट जो है बेटा, ये आपको डिटेल में पढ़ना है 12th में, लेकिन यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, याद आपको यहाँ पे रखना है. अगर आपको कोई बोलेगा कि व्हाट इज द नेचर, एक्चुअल नेचर ऑफ द लाइट, तो आप कहोगे इट हैज अ ड्यूअल नेचर. वन इज द पार्टिकल नेचर बिकॉज इट कंसिस्ट्स ऑफ शाबाश small discrete particles called photons, and it shows certain phenomena like reflection and refraction. So in this case we can say light has a particle nature. But अभी मैंने point कहा कि light is an electromagnetic wave. It's some sort of disturbance. तो and it shows concepts like diffraction and interference. तो तब हम कहेंगे light has a wave nature. तो कुल मिला के बात ये है कि लाइट जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ बोथ द पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर. दैट इज व्हाई it is called as dual nature according to modern quantum theory. According to modern quantum theory of light. So this is the fourth characteristic that explains the shabash nature of light. I hope it is clear. It is very simple. The 4 points are very simple.
it's not a big deal for you that you can easily remember that. Okay, it's very nice of you. So the fifth point is light. जब लाइट सोर्स से निकलती है लाइक सन, इसकी स्पीड जो होती है इट इज कांस्टेंट, दैट इज द स्पीड ऑफ द लाइट, द स्पीड ऑफ द लाइट, शाबाश, द स्पीड ऑफ द लाइट is always constant. That is, C is equal to 3 into 10 raised power 8 meter per second. Please remember, ये वैल्यू जो है आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है. 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, what is the speed of the light in vacuum? Or what is the speed of light? Generally, what is the speed of the light? It is 3 into 10 raised power 8 meter per second. So this is the nature of the light. This is the nature of the light. Okay, I hope it is clear to you. पहला पॉइंट मैंने क्या बोला? पहला पॉइंट हमने डिफाइन किया लाइट को. मैंने कहा कि लाइट इज द सोर्स ऑफ, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी that enables us to see the world. Or I also said light is a form of energy that gives us the sensation of the sight or sensation of the vision. And then we talked about the nature of the light. तो nature of the light के बारे में हमने 5 पॉइंट्स को डिस्कस किया. पहला पॉइंट मैंने आपको कहा कि लाइट जो है, शाबाश, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये भी एक पॉइंट मैंने बोला था. नंबर सेकंड, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ट्रांसवर्स वेव, ये दूसरा पॉइंट मैंने बोला. एंड थर्ड पॉइंट हमने बोला कि लाइट कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स एंड ईच पार्टिकल इज कॉल्ड फोटॉन. सो फोटॉन इज द बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइट. आई होप इट इज क्लियर टू यू. एंड थर्ड पॉइंट मैंने बोला कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, that's particle nature as well as wave nature. Okay, and I also said the speed of the light is always constant, that is C is equal to 3 into 10 raised power 8 meter per second. I hope it is clear. Now there is a branch in physics. There is a branch in physics in which we study the composition of the light, the characteristics of the light and the nature of the light. That branch of the physics is called as optics. So here we go, optics. तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे सर? नेचर की बात हो रही थी. नेचर में हमने क्या पढ़ा सर? पार्टिकल पढ़ा, कंपोजिशन पढ़ा और उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा. तो अगर हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को क्या कहते हैं बेटा? शाबाश शाबाश, ऑप्टिक्स. तो वी विल राइट ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ physics in which we study, shabash, in which we study the nature and composition, the nature and composition of light. Composition of light. There are n number of characteristics. There are so many characteristics of the light. But for your board exams, my dear, if you remember only these points, it is more than enough. I hope it is clear to you. Thank you very much. And one more point that I want to say you. So if you really like this video, if you really enjoy this video, if you find this video very informative, please do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. क्योंकि जो मैं अपकमिंग वीडियोस मतलब अपलोड करूंगा ना, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगी. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कमेंट जरूर करना है, क्योंकि कमेंट से मुझे पता चलता है कि एम आई गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट. तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. अगर कभी कभी मेरा पॉइंट स्किप होता है तो अगर आप मुझे मतलब फीडबैक देते हो तो सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई टीचिंग. बिकॉज ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना बेटा, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. इंसान कभी भी किसी भी वक्त सीखता है. ठीक है, तो एरर्स जहां पे होंगे, तो जहां पे एरर्स आपको लगता है कि एरर है, तो प्लीज एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सो दैट जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला होगा उसमें वो एरर नहीं रहेगा. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.
and Assalamu alaikum wa rahmatullah.